हेलो एवरीवन, को बैक टू Campuswala, वन स्टॉप फॉर ऑल कॉलेज क्वेरीज। दोस्तों, आज की हम बात करने वाले हैं B.Tech फ्रॉम PES यूनिवर्सिटी के बारे में। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं। But before starting, I request you all to please subscribe to our channel and don't forget to press the notification icon so you won't miss any update from our videos. So let's get started. Located in Bangalore, the PES University was established in 1972 and through various departments offers UG, PG and various other courses to students. These courses are provided across engineering, architecture and various other streams. The university is ranked under the band of 101 to 150 by the NIRA for B.Tech category. Hence, PES is one of the top ranked universities present in India. PES IT is approved by UGC and AICTE. PES Bangalore is accredited by NAC also. बात करते हैं B.Tech प्रोग्राम के बारे में। So PES University B.Tech is a 4 years UG degree across 6 specializations. The 4 years B.Tech is spread across 8 semesters apart from the B.Tech course. The university also offers B.Tech diploma lateral entry in 4 specializations. Students who are willing to take admission to the B.Tech course at PES University must check their eligibility and follow the university's selection criteria. At PES University, the selection is based on entrance exam. The popular exams that are considered for admission are PES-SAT, KCET and GRE mains. बात करते हैं इनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में। So for computer science engineering, artificial intelligence and machine learning, it is 4,80,000 per annum. For electronics and communication engineering, it is 4,20,000. For mechanical engineering, electrical and electronics engineering and biotechnology, it is 3,80,000. For computer science engineering, it is 4,80,000. For electronics and communication engineering, it is 4,20,000. For electrical and electronics engineering, it is 3,80,000. बात करते हैं इनके प्लेसमेंट्स के बारे में। सो मीडियन पैकेज इनका गया है 8 LPA. टॉप रिक्रूटर्स आर Amazon, Flipkart, IBM, CSG System International, Deloitte, Atos India Private and Limited. ये इनके टॉप रिक्रूटर्स हैं। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखने वाला एक सवाल अभी आपके पास आ रहा हो कि हमने जो एग्जाम दिया था, जो एंट्रेंस एग्जाम दिया था, उनके स्कोर्स के अकॉर्डिंग हमें हमारे ड्रीम कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिल पाया, ड्यू टू एनी रीजन आपको एडमिशन नहीं मिल पाया। क्या हमारे उन स्कोर्स के बेसिस पे टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया एज एन ऑप्शन अवेलेबल है? कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है? वहां का एडमिशन प्रोसेस क्या है? वहां का फीस स्ट्रक्चर क्या है? वहां पे स्पेशल सीट्स या मैनेजमेंट सीट्स अवेलेबल है या नहीं है? इन सारे सवालों के लिए ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टू गिव अस कॉल ऑन द हेल्पलाइन नंबर। दी हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर हमारे काउंसलर्स आपको गाइड करते रहेंगे थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। दे विल लेट यू नो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसेस or related to the colleges which are available to you according to the scores which you have got in your entrance exam, or related to the management seat or special seats which are available in the colleges. All you have to do is just to give us a call on the helpline number to get all of these details. So thank you so much for watching. See you in another video.